पीरियोडिक वेव्स एंड प्रोग्रेसिव वेव। हमारे पास पीरियोडिक वेव्स क्या है एंड प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं। तो कोई भी ऐसी वेव्स जो किसी एक स्पेसिफिक डिस्टरबेंस, स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम जैसे हमारे पास है, उसके बाद उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो और उनकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस हो, उनको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक वेव्स। द वेव इन विच द वेव्स in which disturbance occurs, disturbance occur at a fixed interval of time, at a fixed interval of time, interval of time, मतलब ऐसी वेव्स जिसमें डिस्टरबेंस एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हो रही हो। ऐसी वेव्स जिनमें डिस्टरबेंस एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हो रही हो, उनको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक वेव्स। द वेव इन विच डिस्टरबेंस अकर एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर called periodic waves, are called periodic waves. फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे पास जो पीरियोडिक वेव्स हैं उनकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, सरफेस ऑफ ड्रम डिस्टर्ब बाय स्टिक, सरफेस surface of drum disturbed by stick, disturbed by stick। या आप ड्रम के ऊपर स्टिक से क्या करते हैं? डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आप स्टिक को हिट कर रहे होते हैं। उनसे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी दैट आर नोन एज पीरियोडिक वेव्स। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर, दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक वेव्स। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव। तो अभी तक हमने जस्ट पीरियोडिक वेव्स की हैं और प्रोग्रेसिव वेव्स की हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बच्चे, कोई भी ऐसी वेव्स जो एनर्जी को आगे की तरफ ट्रांसफर करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। कोई भी ऐसी वेव्स जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, ट्रांसफर करती हैं, दैट आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द वेव in which energy is transferred, energy is transferred, energy is transferred away from the point of disturbance, away from the point of disturbance are known as, are called periodic wave, progressive wave, sorry, progressive wave. The wave in which energy is transferred away from the point of disturbance are called progressive wave. For example, transverse and longitudinal waves. For example, transverse and longitudinal wave. Longitudinal wave are progressive because they transferred energy away from the source. So this is about the progressive wave and periodic waves. तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका मतलब है, जो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था,
कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव वो दोनों एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होती हैं, तो दे आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। और जो नेसेसरी कंडीशन फॉर वेव मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर वेव मोशन? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वेव मोशन, व्हाट आर द conditions for wave motion? इसमें आपने दो मेन कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं? द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, and the second condition for wave motion is the particle of medium should not independent of each other. Means they do not, because they are depend on each other. The particle of medium should not independent of each other. Should not independent on each other. Independent of each other means वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, so they could exert force on each other. So they could exert force on each other. Means the particle of medium should not independent of each other. तो एक दूसरे पे हम कह सकते हैं डिपेंड करते हैं, सो दे कुड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, मतलब हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रखता है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि कुछ आपको मेन पॉइंट्स आने चाहिए कि वेन एवर द वेव ट्रेवल फ्रॉम इन द सेम मीडियम एंड व्हेन दे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, which quantity remains same and which quantities are changing. तो यहां पे अब हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट इज चेंज इन मीडियम व्हेन, ये जस्ट आपने मेन पॉइंट्स आप कह दें, दीज आर द एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखने पॉइंट्स। और वो फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन द वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मींस हम लिख देते हैं व्हेन वेव मूव फ्रॉम one medium to another medium. When wave move from one medium to another medium, और हम ऐसे कह सकते हैं there is a change in the medium, when there is a change in the medium, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं there is different medium, wave move from different medium, ये एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, चेंज इन द मीडियम और द डिफरेंट मीडियम। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि वेन एवर द वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, आपके पास कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? तो आपने याद रखना है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, कि जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या कोई भी वेव है, जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, और अब हमें पता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सो एफ इज कांस्टेंट, सो इट मींस v डिपेंड्स अपॉन लैम्डा। तो देयर इज अ
direct relation between velocity and the wavelength of the wave. If velocity increases, then wavelength also increase. If velocity increases, then wavelength also increased, but and vice versa. And vice versa मीन्स अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो वेवलेंथ भी कम होगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. बट फ्रीक्वेंसी remains same. But the frequency remains same whatever medium is more dense or less dense. Whatever the medium is more dense or less dense. Whatever the medium is more dense or less dense. तो आपने याद रखना है, whenever there is a change in the medium, the frequency remains same. So we have a direct relation between velocity and the wavelength. So it means if the velocity increases, wavelength also increases. Next, अभी तो हमने मीडियम को बच्चे चेंज किया है. If the medium is same, when the wave move within the same medium, means one gas to another gas, one liquid to another liquid, ऐसी सिचुएशन है. मीन waves move from one medium या within the same medium ऐसे कह देते हैं, within the same medium. Now, whenever there is a same medium like gas to gas, water, liquid to liquid, so velocity remains same. So in this case, we know that V is equals to F lambda, where the V is constant. So we have lambda and frequency now become inverse relation with them. So it means if the lambda increases, then frequency decrease. The lambda increases, frequency decrease, but velocity remains same. But velocity remains same. मतलब मीडियम सेम होने का मतलब गैस टू गैस, लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू सॉलिड. इसमें आपके पास मीडियम में चेंज आने सेम होने की वजह से वेलोसिटी सेम रहती है, तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे. अगर लैम्डा ज्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. नेक्स्ट इज, अगर हम साउंड की और लाइट की बात करें, नॉर्मली साउंड वेव्स हैं और लाइट वेव्स हैं, उसमें हमारे पास कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी और कौन सी चीज सेम रहेगी. फर्स्ट इज चेंज इन द मीडियम. चेंज इन द मीडियम. Change in medium. Now, for light, one we have a light waves, light and sound. We have two types of waves, light waves and sound wave. So for denser medium, whenever there is a denser medium, the medium is
denser. So the light and wavelength, in case of light, the velocity of the light and lambda wavelength decreases. इसका मतलब है जब भी लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी, मींस मूव फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, the velocity and the wavelength of light decreases but frequency remains same. जबकि यहाँ पे अगर साउंड है, they move from rare medium to denser medium, तो इस केस में हमारे पास आप कह सकते हैं कि velocity and wavelength increases. Velocity and wavelength increases. Next is if the medium is rare medium, means the light move from denser to rare medium, less denser medium. Rare medium. When the light move from denser to rare medium, the velocity and wavelength of the light increases. But in case of sound, velocity and the lambda wavelength decreases. जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो वेलोसिटी और वेवलेंथ लाइट वेव्स की इंक्रीज होंगी और साउंड वेव्स की डिक्रीज होती है, और विद इन द सेम मीडियम वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. जब हमने प्रीवियस किया, विद इन द सेम मीडियम वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एंड विद इन डिफरेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. और बाकी क्वांटिटीज में आपने देखना है कि आइदर दे हैव इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन. नेक्स्ट, फॉर वाटर वेव्स, if there are water waves, तो हम नेक्स्ट वाटर वेव्स ले लेते हैं. Water waves. Now if the water travels to the deeper portion or shallow water, mean हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि the water waves travel. अब वाटर वेव जो ट्रेवल होगा, either they travel in the deeper region or in a shallow water region. So next is shallow region. Next, so when the wave water goes in a deep region, so in this case velocity and lambda of water increases. Velocity and lambda wavelength increases. Or in a shallow region, shallow water, the velocity and wavelength decreases. Velocity and wavelength decreases. Deeper means far down. जैसे deep लिखते हैं हम यहाँ पे, deep का मतलब, for example, this is a water surface और ये आपने इसमें water को क्या किया हुआ है, fill कर देते हैं. Let's suppose these are the water molecules inside the tank, और यहाँ पे एक हम कोई भी fish बना देते हैं. So here there is a fish. So this is the in the deep region. Deep means far down, and shallow mean not very deep. Shallow means not very deep, on the surface of the water. Let's say on the surface of the water. Like for example, this is a water, and the shallow mean fish is on the surface of the water. Fish, and if it is on the surface, it means it is a shallow region. Shallow mean
not very deep. So these are the some important points related to the waves when it enters from denser medium to rare or rare to denser. If the change in the medium within the same medium, what will happen with the velocities, frequencies, and the wavelength?